In the quadratic equation, we have already studied that, the roots and all, right? So now we are going further with that. Let x1 and x2 are the roots of quadratic x square plus x minus 7 is equal to 0. Find value of first x1 square plus x2 square, second x1 cube plus x2 cube, third x1 to the power 4 plus x2 to the power 4. Right? Start. This is one of the simplest question. We can see this. Two informations, in fact, three informations are coming from this. First is x1 plus x2, x1 into x2, and x1 minus x2, root d by a, right? All the three informations are there. What we required, x1 plus x2 and x1 into x2. From first question, we can say that x1 plus x2 the whole square, we can write x1 plus x2 the whole square minus 2 x1 x2, right? 1 minus 2 into minus 7 will be 15. Right? Go for the second one. x1 cube. So we can write this as x1 plus x2 and x1 square plus x2 square minus x1 x2. Or we can rewrite as x1 plus x2 ka whole square minus 3x1 x2.
x1 plus x2 was given as -1. This is -1 square is 1. 3 into -7 minus plus -22. Hope everyone is getting this. Since we have x1 square plus x2 square, right? So directly now we can go for x1 to the power 4 plus x2 to the power 4 to the power 4. This will be x1 square plus x2 square the whole square minus 2 x1 x2 the whole square. This was 15 square minus 2 into -1 square. 225 minus 2 will be 223. I guess everyone is getting this. Note down, please. The second question on this, if alpha beta are the roots of quadratic 6x square minus 5x minus 3 is equal to 0, find equation whose roots are alpha minus beta square and beta minus alpha square.
Look into this. Alpha and beta are the roots of the quadratic. So two values are given here. First is alpha plus beta. The value of alpha plus beta is minus minus plus 5 by 6. Alpha into beta is minus 3 by 6 is minus half. Now we have to find equation whose roots are given alpha minus this and beta minus this. We know that quadratic we can form as x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0, right? Sum of the roots and product of the roots. So x square minus sum of the roots, right? What is the value of sum? अलग से निकाल लेता हूँ. Alpha minus beta square plus beta minus alpha square. This will be alpha plus beta minus alpha square plus beta square. Product alpha minus beta square, beta minus alpha square. This is alpha beta minus alpha cube minus beta cube plus alpha beta the whole square. जल्दी से सभी लोग सम एंड प्रोडक्ट निकालो तो क्या आ रहा है देखें एंड राइट डाउन इन चैट प्लीज. जहां पर ये दो वैल्यूज मेरे पास है अल्फा प्लस बीटा इज 5/6, अल्फा इंटू बीटा इज माइनस हाफ. ये दो के हेल्प से यू हैव टू फाइंड these two values alpha plus beta minus alpha square plus beta square and second is this one. Okay, two values are given alpha plus beta and alpha into beta. You have to find values from there, right? We can rewrite this as alpha plus beta is 5/6, so alpha square plus beta square is equal to alpha plus beta ka whole square minus 2 alpha beta. Alpha plus beta is 25/36 minus 2 alpha beta is half cancel out. Sir, minus 31/36. Right, upon 36, right? Alpha square plus beta square. And now you have to find alpha cube plus beta cube for this. Alpha plus beta into alpha square plus beta square minus alpha beta. You have all the values. Alpha plus beta की values मेरे पास है 5/6. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास है 61/36 माइनस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास है दैट्स माइनस हाफ. राइट, यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज. होप एवरीवन इज गेटिंग इन दिस. कितने लोगों का आ गया? राइट डाउन यस इन चैट प्लीज. राइट डाउन यस इन चैट प्लीज. You all are getting this? Okay. So these are the simple question. Only you have to use alpha plus beta and alpha into beta. Now, everyone careful. मैं एक और questions दे रहा हूं. If the difference of the roots of the equation of the equation 2x square minus
a plus 1 into x plus a minus 1 is equal to 0 is equal to their product. Find a find करो. Sir, could you scroll up for a minute? Yes. If the difference of the roots of the equation 2x square minus a plus 1 into x plus a minus 1 is equal to 0 is equals to their product, then find value of a. Get the value, do it fast. Okay, right? So see, what is the question, right? What question is given and how to solve this, right? What are the keywords? The difference is equal to the product.
So two things are coming, difference and product. डिफरेंस मीन्स अल्फा माइनस बीटा मॉड में लेना होगा इनटू अल्फा बीटा, ये दोनों क्वांटिटी सेम है. We know that difference is nothing but root d by a is in the mod, right? And alpha into beta is c by a, right? ये मैंने कैंसिल किया. सो रूट डी इज इक्वल टू सी मीन्स डी इज इक्वल टू सी स्क्वायर. डी का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर. बी, अब इस क्वेश्चन में बी मेरे पास है ए प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस फोर, ए है टू, सी है ए माइनस वन इज इक्वल टू ए माइनस वन द होल स्क्वायर. बस इतना सा क्वेश्चन, राइट? ट्रांसफर करता हूं, ए प्लस वन होल स्क्वायर ए माइनस वन होल स्क्वायर ए टाइम्स ए माइनस वन, राइट? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी दोनों ऐड हुआ, ए माइनस बी दोनों सब्ट्रैक्ट किया मैंने, 8 times a minus a, 4 2 are 8. A is equal to 2a minus 2. A is equals to 2. One of the simplest question, I guess. क्या बोलते हो? Yes, everyone. Is it? Solve होना चाहिए था. Done, Sir? everyone? Yes. Sir, could you please call back to the question? Is it okay? Yes, sir. Okay. Next. If one root of a times x minus 1 whole square is equal to 5x minus 7 is double of the other root. Find value of a. Find value of a. Okay, do it fast.
ये कंडीशन बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यूज़ भी होते हैं, ध्यान देना। मैं इसे एक जनरलाइज केस करके पहले दिखाता हूँ। लेट्स सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके लिए बात कर रहा हूँ, राइट। इसके जो रूट्स हैं, एक रूट अल्फा एंड सेकंड रूट 2 अल्फा, यही बात हो रही है, राइट। वन रूट इज अल्फा, सेकंड रूट इज 2 अल्फा। इसको और जनरलाइज करने के लिए मैं अगर चाहूं तो इसे लिख सकता हूं वन रूट इज अल्फा, अदर रूट इज एन अल्फा, राइट। सम ऑफ द रूट, राइट, फर्स्ट सम जो आता है अल्फा प्लस एन अल्फा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट जो आता है वो आता है अल्फा इंटू एन अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए, राइट। So from first we are getting alpha 1 plus n is equal to minus b by a and n alpha square is equal to c by a, right? Squaring both side, alpha square 1 plus n whole square b square by a square is equal to n alpha square is equal to c by a. अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, c 1 plus n the whole square by a कैंसिल हुआ, ac एंड एन बी स्क्वायर। ये रिजल्ट मेरे पास एक प्यारा सा आ गया। ये एक रिजल्ट बन गया, राइट। ए सी 1 प्लस एन एन बी स्क्वायर, राइट। I didn't get that. Could you try ये again? रिजल्ट का मतलब अपने आप में मेरे पास हो गया कि n की वैल्यूज अगर मैं चेंज करता जाऊंगा, अकॉर्डिंगली वी विल गेट द आंसर। सो n की वैल्यूज इस केस में जो मेरे को गिवन है दैट इज 2 ओनली, और अगर ये नंबर 2 गिवन है तो दिस इज 2 प्लस 1 3, 9ac इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब ध्यान से देखो आपके क्वेश्चन में क्या a है, क्या b है, क्या c है। ये एक जनरलाइजेशन मैंने करते हुए पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने की या आपको थ्योरी बताने की कोशिश की। नाउ यू हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ a। जल्दी से फाइंड करके कोशिश करो तो। Sir, Yes. sir, inside the bracket you have written AC 1 plus n का whole square. Yes. Sir, could you hear me? Yes. Sir, I'm asking कि आपने Yeah. जो ब्रैकेट में आपने ब्रैकेट के ये स्क्वायर के अंदर ये लिखा है कि AC 1 plus n का whole square. Yes. Okay. Done. Everyone. The question could be one root is double of other. Maybe question I can just write down the question is ratio of the root is 2 by 3. So the value of n will be 2 by 3, right?
सो बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज हो सकते हैं, राइट? सो डू इट फास्ट. Sir, hello, sir. यस बेटा. सर आपने वो जनरलाइज फॉर्म लिखा था वो दिखाओ ना एक बार सर. ये है बेटा a इंटू सी 1 प्लस एन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू एन बी स्क्वायर. बहुत सारे जनरलाइज फॉर्म आएंगे और ये सब अगर आपको याद रहते हैं तो दैट विल बी मिरेकल फॉर यू, राइट? बहुत अधिक काम आ जाएगा. इसमें से फर्स्ट ये था, क्वेश्चन करूंगा बीच बीच में ये कुछ फॉर्म भी बताता जाऊंगा, राइट? अब यहाँ पर अगर मेरे को सॉल्व करने हैं, राइट, अब मेरे पास जो इक्वेशन थे उसमें अगर ध्यान से देखो तो पहले तो इसे क्वाड्रेटिक कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट, इस फॉर्म में, जिससे ए बी सी की वैल्यूज पता चल जाए. ए एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस 5 इंटू एक्स प्लस ए प्लस 7 इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू है ए, बी की वैल्यू है माइनस ऑफ 2a प्लस 5, सी की वैल्यू है a प्लस 7, राइट, एंड एन की वैल्यू है 2. ये यहाँ पर आपको रखते हुए a की वैल्यूज के लिए सॉल्व करना है. इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. राइट. नेक्स्ट. If alpha and 1 by alpha are the roots of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, then find condition on A, B, and C. It's a second question. It's coming on this. Not only the question, this is the question as well as the theory. If alpha and 1 by alpha, maybe this question will be presented in the form of both the roots are reciprocal to each other, right? क्वेश्चन का कन्वर्जन ये भी हो सकता है. Possibly you will get the conversion in this form. Both the roots are reciprocal to each other, right? Then find condition on A, B, C. ध्यान देना. What we have, we know that we have three relation: alpha plus beta, alpha into beta, alpha minus beta.
While finding this, I know okay, the best formula for this will be alpha into beta. And we know that alpha into beta, right? Alpha into beta is nothing but C by A. And what is the value of beta in this case? Beta is nothing but 1 by alpha. So alpha into 1 by alpha is equal to C by A, or we are getting C is equal to A. Is it okay, everyone? Yes, sir. Note down, please. And you have to remember this, right? Okay. See, reciprocal to each other, right? Both the roots are reciprocal to each other. Now, in the same sense, if I'm saying for quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, both the roots are same in magnitude but opposite in sign. Find condition. Right, for quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, both the roots are same in magnitude but opposite in sign. Find condition. Sir, minus b equals to a. और a equals to minus b. थोड़ा फास्ट हो गया बेटा, जो भी गलत भी हो गया ना, तो टेक योर टाइम, थोड़ा सोचते हुए फिर से. Sorry, sir. B equals to 0, sir. Very good. See, the best formula for this is because one root is alpha and other root is minus alpha, right? One root is alpha and other root is minus alpha, and now you have to find, right? So the best way to use the formula as alpha plus beta, and beta is nothing but minus alpha, to alpha minus alpha is 0. So minus b by a is equal to 0, or b is equal to 0, right? So coefficient of x must be 0. You have to remember, right? These are the simple thing, but every time in IIT-JEE mains examination, you'll find question from this. Okay, but if we want to just explore this or just want to go beyond the theory of this thing, Sir, the quadratic. Yes, beta? sir, could you please scroll up? Why? Not done yet? Sir, थोड़ा और ऊपर, मैं कुछ छूट गया था sir. Done? Okay. First question, alpha and 1 by alpha. So I'm getting product of the root is equal to c by a, c is equal to a. Second question, one is alpha, other is minus alpha, so sum will be 0. Got it, sir. Next question, one root is a square of other, right? One root is a square of other. Find condition. Obviously, ये पूरी बात उसी के लिए हो रही है ax square plus bx plus c is equal to 0 के लिए, right? Take your time.
लेट्स स्टार्ट. मैं स्टार्ट करूं? Yes, sir. Okay. Sir, I message you an answer. Hey, Answer chat. done. Answer done, beta. Yes, sir. It's alpha and alpha square, not alpha and 2 alpha. One root is square of other. So one root is alpha, then other root will be alpha square. We know that sum of the root is equal to minus b by a. Product of the root is equal to c by a. Right? So what we are doing, first जो equation आया उसको मैं cube कर देता हूँ. Minus sign. This will be alpha cube, alpha to the power 6, 3, alpha into alpha square, alpha plus alpha square is equal to minus b cube by a cube. ये given था alpha cube is equal to c by a. अब इसे मैं यूज कर लेता हूं इस वाले इक्वेशन पे. So what c by a the whole square, 3 alpha cube is c by a, alpha plus alpha square is minus b by a minus b cube by a cube. ओके थोड़ा a क्यूब से मल्टीप्लाई किया. C with minus sign, minus b cube. A square c plus ac square plus b cube is equal to 3abc. The last result, what you are getting, I suppose to you have to get this result. Sir, please can you scroll up? Why not? I'll do that, Nabita. Why you are in so hurry? Okay, na? Yeah, go ahead. Yes, sir. Thank you. Sir. Yes. So, sir, all these conditions will be used in our next questions. Pardon, beta? So, sir, these are all those conditions which you're teaching us so that it will be necessary for our next questions. Yeah, all are different conditions. Na? This is for one root is alpha and other root is alpha square. One root is a square of other, then you'll get this condition, right? All are different conditions. This question is for one root is a square of other, right? Earlier to this question was both the roots are same in magnitude but opposite in sign, right? This was both the roots are reciprocal to each other, right? One root is alpha, other root is an alpha, right? Or alpha and beta, the ratio is something given, right? So it's on demand, like what question is demanding, according to that only we have to answer, right? Okay. Should I proceed? Next मैं question पे जाऊं? Please wait 1 second. Yes, sir. Done. It's a beautiful condition is coming, right? Everyone very careful for this condition.
one root is alpha and other is alpha to the power n. Find condition. For the equation is same. That's ax square plus bx plus c is equal to 0. Take your time. 4 minute time I'm giving to you ना. आराम से ट्राई करो अच्छे से, फिर मैं करता. सर मतलब आपने लास्ट क्वेश्चन को जनरलाइज किया है क्या? बोल सकते हो बेटा, करीब लास्ट क्वेश्चन आपका जनरलाइज हो गया है यहाँ, लेकिन पावर n देना तो हमारे बस की बात नहीं है ना, तो कुछ और अच्छा उपाय हाँ करना पड़ेगा ना, केयरफुली. हाँ सर.
one root is alpha, other root is alpha to the power n, right? So alpha plus alpha to the power n is equal to minus b by a, first condition. Obviously, alpha into alpha to the power n is equal to c by a, second condition. From the second condition, we can 100% say alpha to the power n plus 1 is equal to c by a, or alpha is equal to c by a to the power 1 by n plus 1, right? Put this alpha on first equation. We are getting something majar cheez. What? C by a to the power 1 by n plus 1 plus c by a to the power n to the power 1 by n plus 1 minus b by a. Multiplying with a, what we are getting? A into c by a to the power 1 by n plus 1, a into c to the power n, a to the power n by n plus 1 plus b is equal to 0. एक छोटा सा कंसेप्ट यहां समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या? मान लो मैंने कहा a इंटू सी बाई ए टू द पावर 1 by 5 को मल्टीप्लाई करना है. Let's suppose, just giving you the example, concept clear हो. But a का यहाँ पावर 1 है और ये पावर इज 1 by 5. अब दोनों के पावर सेम नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई कर सकूं. सो व्हाट आई एम सेइंग कि ओके पावर सेम नहीं है तो पावर सेम बना लेता हूं. कैसे? इसका पावर 5 देके उसका पावर 1 by 5 कर दिया. अब ये दोनों नंबर मेरे मल्टीप्लाई हो सकते हैं. जो भी रहा ये a to the power 4 c आ गया. इज इट ओके? अब ये छोटी सी बात जो है यहाँ पर, इसी कंसेप्ट को मैं यूज करते हुए, राइट, इस छोटे से कंसेप्ट को यूज करते हुए ऊपर जो रिटर्न है मेरे पास, इसे लिख सकता हूं, क्योंकि a का पावर मुझे देना पड़ेगा n प्लस 1, a से कैंसिल होगा, a टू द पावर n इंटू c बाई n प्लस 1 प्लस a टू द पावर n प्लस 1 1 by n plus 1 plus b is equal to 0. So this is the most awaited and कम से कम 3 बार किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन का रिजल्ट. पूरा सॉल्यूशन आप देखो, आराम से नोट करो, कहीं भी कुछ दिक्कत लगती है यू कैन डिस्कस. Sir, Yes. sir, Yes. Sir, I just want to know, uh, after that blue equation, you have multiplied both the sides with a. Yes. Okay. Done everyone?
Wait, sir, please. Sir, sir, Yes. सर अगर पावर 2 होगी हम्म तो हमें जो लास्ट इक्वेशन मिला था वही मिलेगा सर. हाँ बेटा, फिर उसको क्यूब करना पड़ेगा ना. किसको ओके, सर? क्यूब करना पड़ेगा. रिजल्ट वो पावर का देखो ना, पावर उसमें डिफरेंट है ना, 1/3 पावर में नहीं है वो ना. हम्म. ओके, so you have to take care of that key, what they are asking na. Okay, next question I am giving you, right? Everyone careful. Condition, the same equation is there, ax square plus bx plus c is equal to 0. See, the ratio of the root is given, right? Term जो use करेगा तुम्हारे पास वो term use होगा ratio, right? Ratio is given. In this case, ratio is given 2/3, right? Ratio given had 2/3, ratio given होगा 5/4, 1/2, 2/1, anything would be there, right? किसी तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम होगा, you have to be careful. If the ratio of the root is given as 2/3, then you have to find the condition. Okay? Okay? Want to try this? मेरे शेर चीतों, कुछ ट्राई करना चाहोगे क्वेश्चन या सर ही कर दें? Yes, sir. कर रहे ट्राई? ओके, Yes, sir. मैक्सिमम 3 मिनट्स. यहाँ पर टेंशन टी
और किसी स्पीड ओमेगा से अगर रोटेट कर रहा है, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है, इसका r1 इसका r2, तो आपसे मैं चाहूं तो ये बहुत अच्छे तरीके से यूज हो सकता है, राइट। AC n+1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू बी स्क्वायर, राइट। अब ये रिजल्ट को अगर मैं यूज करना चाहता हूं तो कैसे यूज होगा? एक हमारे पास अल्फा एंड बीटा का रेशियो 2/3 दे दिया, तो इफ आई एम सेइंग कि एक रूट है अल्फा, दूसरा रूट है बीटा, सो बीटा की वैल्यू यहां पर होगी 3/2 अल्फा, मीन्स आई कैन से वन रूट इज अल्फा, अदर रूट इज 3/2 अल्फा. 25 AC by 4 is equal to 3B square by 2. That's 25 AC is equal to 6B square. I guess यही आ रहा होगा सभी का? Yes, sir. हाँ, तो आपने जितने फॉर्मूलाज किए हैं अगर उनको ध्यान से रखते हो ना बेटा, वेरी गुड फॉर्मूलाज, बड़े आसानी से आंसर के लिए जा सकते हो. होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. ओके, Sir, 1 minute. done. The next we are starting identity. What is this identity? ख्याल करो कभी पहले भी आप लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ा होगा, तो सबसे वेल नोन आइडेंटिटी जो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो बचपन से स्टार्ट करके रखा हुआ है, सबसे अच्छी आइडेंटिटी होती है, दैट्स कॉल्ड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, राइट. Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. What is the meaning of identity? Identity means this will satisfy each and every values of theta. थीटा की वैल्यू 0 रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं. Integration of f1 dx plus f2 dy from initial to final position. So that becomes f. ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया है, गलती से तुम लोग ठीक क्वेश्चन पूछ लिया, कॉपी कर लो इसको. Done. 1 minute, sir.
सर हो गया। ओके, आंसर भी लिख दें सभी लोग जल्दी जल्दी। दीप का आंसर आ चुका है 1 2 -2 3, वेरी गुड। और कोई? सी क्या है? आंसर लिखें जितने लोगों का आ गया। राइट डाउन द आंसर प्लीज। ध्यान दो, क्या होना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस 4 को 0 होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 को 0 होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 को भी 0 होना चाहिए। ये तीनों को 0 किया। यहाँ से a की वैल्यू आई प्लस माइनस 2, यहाँ से a की वैल्यू आई 1,2, यहाँ से a की वैल्यू आई 2,3। बट आपको अगर ख्याल हो तो मैंने ये बोला था वो वैल्यू मेरे को चाहिए जो तीनों को सेटिस्फाई कर रही हो। तो केवल एक ही वैल्यू ऐसी है जो तीन। Let's see an example of the application of this. So now we'll come to something which is extremely simple in calculation. So we have that regular inclined plane kind of problem. So let's take our favorite value of 37 degrees as the angle of inclination and coefficient of friction as 0.5. So you can see it is less than tan theta. So if I release a block from here, it will start sliding down. So block is released from this position A at rest, and as it slides down, after some time it reaches the position B, and by then सर मैंने आपको आंसर भेजा चैट में। वेरी गुड, वेरी गुड। So this time I guess everyone is getting plus minus 1, 1,2, 0, 1. Only the value 1 is satisfying in all the case. So A is equal to 1. How many of you got right answer? Write down yes in chat, please. Okay, right. Next we are going to do is called transformation. Right, transformation of equation. Like if it is given, ध्यान से समझना ना, ax square plus bx plus c is equal to 0 and whose roots are alpha and beta. Find equation whose roots are alpha plus 2, beta plus 2. Right? या 1 by अल्फा 1 by बीटा या माइनस अल्फा माइनस बीटा, कुछ भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। राइट? सो अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन देख रहा हूँ, मान लो एक शुरुआत के लिए मैं एक क्वेश्चन दिया लाइक अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। राइट? वी नो दैट अगर मुझे निकालना है तो बेसिक फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। हमने पहले भी क्वेश्चन किया था। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन से ये कैसे सॉल्व होगा? ध्यान दो, अल्फा इज, एकदम ध्यान से ना, लिखना मत, अभी केवल देखना ना। अल्फा इज द रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सो अल्फा मस्ट सेटिस्फाई दिस। सो a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Beta is the root of second equation, तो a beta square plus b beta plus c is equal to 0. ये दो इक्वेशन आ गया। राइट? नाउ अल्फा प्लस 1 को हमने कैपिटल ए नाम दे दिया, बीटा प्लस 1 को हमने कैपिटल बी नाम दे दिया। ठीक है? इस पे आने के पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पहले फ्रेम करूंगा जिससे आप कंसेप्ट को समझ पाए। क्या क्वेश्चन? अल्फा स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू 0, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। राइट? दो इक्वेशन दे दिया और मैं बोल रहा हूं फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू होगी ये आपको बतानी है।
यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या होंगे? ध्यान से देखो, मैं सॉल्व करके भी मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना। व्हाट आई एम सेइंग कि मैं एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ले लिया। मैं बोल रहा हूं इसे अल्फा सेटिस्फाई कर रहा है और इसे बीटा सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है ये जो इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स हैं, roots are alpha and beta. Now we know alpha plus beta is equal to minus b by a, so alpha plus beta की वैल्यू आ गई 3। Is it okay everyone? क्या ये सही है? क्या ये सभी को समझ में आया है? अगर मैं यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा चाहता हूं तो क्या मुझे अल्फा बीटा दो इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है? एकदम नहीं। मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसी में मुझे अल्फा एंड बीटा मैनेज करने हैं और दोनों अपने आप मैनेज हो रहे हैं। सर यस, तो सर आपने जो दो इक्वेशन को जो स्प्लिट कर रहे हैं, जो आपने अल्फा और बीटा के टर्म्स में लिखा, मतलब वहां पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। नहीं समझा मैं, कम अगेन, फिर से बोलें। सर जैसे आपने एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 जैसे आपने बोला इसके रूट्स अल्फा प्लस बीटा है, तो बाद में आपने दो For this partner, just take suppose you take it as 1 meter. Let's see what we get for this. क्वेश्चन तो सीधा जो लिखा हुआ है वही क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा दो इक्वेशन देके पूछ दिया मैं अल्फा इंटू बीटा में। वैसे मैं अभी तो कंसेप्ट पढ़ा रहा था, ये समझ में आया या नहीं? हाँ सर समझा। सो अब मेरे पास ये दो इक्वेशन आ गए, ठीक। मैंने कहा कैपिटल ए एंड कैपिटल बी हमने एज्यूम किया हुआ था, एक्चुअल बात तो यहीं के लिए चल रही थी, राइट। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी a माइनस 1, तो अल्फा की वैल्यू मैंने इसमें पुट किया, राइट। बीटा की वैल्यू में Integration. We can just get away with doing the dot product. So this is our displacement. And I am saying that it has a magnitude of 1 meter now. Okay, but you can just write it as d equal to 1 meter. Okay. Yeah. So let's calculate each of these. So the first thing we'll understand that three forces, mg, normal reaction, and kinetic friction act on it. Okay. All are constant. जिसकी बात हो रही थी, ओ राइट। तो आपने अगर अब ओवरऑल क्या किया, अगर आप ध्यान से देखो तो आपने सिर्फ और सिर्फ जो अल्फा था उसके जगह पर, या इसे आप समझ लो x है, तो आपने जो पहले जो x दिया था उसके जगह पर आपने केवल x माइनस 1 पुट कर दिया है, तो यू आर गेटिंग द आंसर। तो थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अगर ध्यान में रखो तो वन लाइनर आपका आंसर होगा। आराम से नोट करो, सोचो, समझो इस चीज को, फिर हम लोग इस पर क्वेश्चन बेस करेंगे, राइट। Do it. This is called transformation. सर जो हमने आपने स्टार्टिंग में एकदम क्वेश्चंस दिए थे लास्ट लेक्चर में एंडिंग में सर, वो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? यस बेटा, क्या फिर से बोल लो? सर जो आपने लास्ट में क्वेश्चंस दिए थे ना हमें सर, 5 क्वेश्चंस। हाँ, स्टार्ट विद दिस ax स्क्वायर
plus bx plus c is equal to 0. Roots are alpha and beta. Find equation whose roots are, first question 1 by alpha 1 by beta, right? एक एक करके मैं आता हूं, पहले 1 by alpha 1 by beta. Shaurya, Rudra, Bhargav. Okay, what if in the second question, if I'm asking, it's minus alpha minus beta. Alpha and beta are the roots. आप केवल ये बताओ x के place पर what you have to put, right? Equation पे. You are with two device. Yes, sir. One for audio and one for video. अच्छा अच्छा, it's okay. कुछ बच्चे होते हैं जिनके ऑडियो ऑन नहीं रहते हैं, तो आई एम इनटू दैट, राइट? No, sir. It's me only. ऑब्वियसली नहीं, यू आर नॉट द सिंगल वन ना बेटा. और जो उस तरह के रहते हैं उनको मैं वेटिंग रूम में ही रख देता हूँ, मालूम? तो मैं 2 बार चांस देता हूँ, थर्ड टाइम में वो वेटिंग रूम में रहते बेटा. यू अंडरस्टैंड ना माय पॉइंट? Sir, I can understand, but I'm not one of those children. ऑब्वियसली द रीजन आई डिड दिस ना, कि जो भी गड़बड़ नहीं रहेगा तो दे विल आस्क ना कि सर दिस इज द थिंग्स, राइट? सो माइनस अल्फा इज इक्वल टू ए, अल्फा is equal to minus a, right? So you have to put alpha is the root of the given equation. So this is a minus a the whole square plus b into minus a plus c is equal to 0. In place of capital A, you have to put x. Ax square minus bx plus c is equal to 0, whose roots are minus alpha and minus beta. How many of you are getting this? Write down yes in chat, please. Sir, it's showing that you are not in this meeting. Who? Sir, because when I was replying to you so chat, it was saying that answer is coming, beta. Answer is coming, na? So you tell me na ki this you are getting na? It's okay, na? okay. Okay. Next, you are doing the roots are alpha plus 2 and beta plus 2. Find equation. The roots are alpha plus 2 and beta plus 2. Done, sir. Very good. Means you have to again put capital A is equal to this, or alpha is equal to a minus 2, and in place of a x minus 2 the whole square. देखना मैं धीरे धीरे कट शॉर्ट करता गया स्टेप्स को. नॉर्मन जय, वेरी गुड. Aditya, very good.
Vraj, Bhargav, right? So now, fourth question, 1 by alpha plus 1 by beta plus 1. Fifth question, minus 1 by alpha minus 1 by beta. Sixth question, alpha square, beta square. ये 3 क्वेश्चन है, एक एक करके you have to do it fast. शायद नहीं सर। नहीं सर, फोर्थ नहीं होती सर। सब बोलोगे तो कैसे होगा? चलो फोर्थ से शुरू करो। फोर्थ फाइंड द टाइम पीरियड एंड फोर्स। ओह गधे, ये सब क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखो, a small block of mass m moving on the inside of a smooth spherical semi-sphere radius r in square r/2। ठीक है, तो ये है r/2, नहीं एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम सेंटर, ये है r/2। हाँ सर। तो सर वही √3 r/2। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर लगेगा, यस सर। mg इधर लग, plus a is equal to 0. This is the equation whose roots are minus 1 by alpha minus 1 by beta. Minus 1 by alpha and minus 1 by beta. Is it okay? Sir, could you scroll up? Yes, beta. Sir, a little bit more. This was a question only. Okay. Go for the question number 6. What about question number 6? Question number 6, the roots are alpha square and beta square. Put alpha square is a. So alpha is equals to plus minus root a. Right? Plus minus root a.
and the quadratic that was given for us was ax square plus bx plus c is equal to 0, whose roots were alpha and beta. Put the value of alpha there. So alpha, if I'm writing to a, is plus minus root a the whole square plus b plus minus root थीटा होगा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो T1 माइनस T2 cos थीटा alpha plus b and 1 upon a beta plus b. One upon a alpha plus b, 1 upon a beta plus b. N is perpendicular to ds at all points, or you can say at any instant of time. So n dot ds is 0 at all points. So work done by normal reaction comes out to be 0. So just because in two examples we've got work done by normal reaction is 0 is not a general rule that work done by normal reaction is always 0. Okay, but Sir, can you repeat this again? 1 by a alpha plus b. You have to find 1 by a alpha plus b. We know that alpha is the root of the equation. So alpha is satisfying a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Is it okay? Yes, sir. Right. Now I'm rewriting this a alpha square plus b alpha plus c is equal to 0. Right. How could we write this? इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? Right. it's multiplied by h upon hypotenuse. So ultimately it will come out to be mgh. So you can do it by the triangle geometry also, but so if you just take the triangle between the points A and B, so this is your displacement. So it's fine, you can do that. Okay. But you will be concerned with this angle, no? And this is h and this is d. So s is magnitude will come out to be h square plus d square. But then your weight is acting along this direction. So when you do dot product, mgs cos theta, so that will come into play. So this will become mg into square root of h square plus d square. But into cos theta, you see is h upon root of h square plus d square in the diagram. So again, you are getting that same thing. You are getting this as mgh. So you can take this approach also, but it's not necessary. The vector approach is much easier here. I mean, the component approach is much easier here. में अलग है मतलब अल्फा बीटा सेम क्यों होगा? अल्फा बीटा सेम के लिए क्या कंडीशन होता था? अल्फा इज इक्वल टू बीटा के लिए डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac होता था। हाँ, तो वो क्या होना चाहिए? डिस्क्रिमिनेंट 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अच्छा अच्छा समझा। Sir, sir, can you send the recording of previous lecture? प्रीवियस लेक्चर का मैंने भेजा बेटा, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर भी भेजा हुआ है उसमें। नहीं सर, लॉगरिथम का वो लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं दिखा। क्या डेट बताओ मेरे को? सर डेट kx dx. Okay, so the total work done by the spring force will become integration of minus kx dx. Okay, and we can take from whatever initial position of x to whatever final position. So the general definition of work done by the spring becomes minus half k x final square minus x initial square. I'll show you that this works on the other side also, where this compression
ए के टर्म्स में मिल रहा है। ए के टर्म में कैसे मिलेगा? नहीं, सब ए सब कैंसल कट हो आउट हो जाएगा। जाता है। एम के टर्म्स में मिलना है। ए से इंडिपेंडेंट होगा, एमजी के टर्म में मिलेगा। हाँ, हाँ, 9 mg/4 15। एमजी के टर्म में मिलेगा, जल्दी देखो। अरे इक्वेशन सॉल्व करना है, इसमें भी तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। बोलो, आया आंसर? सर 1 मिनट। सर T1 11/4 mg। आंसर देखो मैच किया कि नहीं, आंसर मुझे याद थोड़ी नहीं। हाँ सर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। आ गया T1 T2 दोनों? हाँ सर, T1 T2 दोनों आ गए। वेरी गुड। क्या है T1 T2 बताओ? सर 15/4। T1 है 15/4 mg, ऐसा? हाँ सर, आ गया। और T2 कितना आया? 9/4 mg। 9/4 mg। सेकेंड पार्ट करो, बी पार्ट। ओके सर, ट्राई करते हैं। बी पार्ट में कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत छोटा है, केवल एक कॉन्सेप्ट मुझे देखना है आप लोगों का आता है नहीं।
टेंशन से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट समझना है खाली उसमें, अदरवाइज एक लाइन का क्वेश्चन है वो। बी पार्ट आया किसी को? नो सर। बी पार्ट कॉमन सेंस से एक बात बताओ, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में फर्क क्या है? देखोगे रिंग आर इज फ्री टू मूव ऐसा लिखा है। यस सर। तो फ्री टू मूव का मतलब ये हुआ कि इस केस में फ्री टू मूव का मतलब ये हुआ कि इस केस में रिंग में वो बांधा हुआ नहीं है, स्ट्रिंग जस्ट रखा हुआ है। इससे पिछले वाले केस में क्या था? बांधा हुआ था। हाँ सर। तो इसमें अगर जस्ट रिंग ऐसे ही फंसाया हुआ है तो ये एक ही स्ट्रिंग हो गया ना, इन दोनों में टेंशन की वैल्यू सेम होगी। उसमें T1 T2 थी, इसमें एक ही T रहेगा। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लॉज ऑफ मोशन में आप लोग पढ़े होंगे कि एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन रहता है। हाँ सर। यस सर। पिछले वाले क्वेश्चन में भी एक ही स्ट्रिंग था, लेकिन बीच में रिंग को बांध दिया था,
तो रिंग के दोनों साइड जो अलग अलग स्ट्रिंग हुए उसमें टेंशन अलग अलग था, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, दोनों में टेंशन सेम होगा। समझा कुछ? यस सर। हाँ सर। तो अगर ये x है तो ये 3a माइनस x होगा। हाँ सर। तो बस अब जैसा पहले किया था वैसा ही कर दो, कुछ नहीं है इसमें। ये एंगल अगर कुछ भी थीटा है तो ये भी थीटा है, तो t cos थीटा mg हो गया, और t प्लस t साइन थीटा ये mv स्क्वायर बाई r हो गया। तो r यहाँ पर x है ना, और x कैसे मिल जाएगा? तो पाइथागोरस थ्योरम से दिख रहा है 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a माइनस x का स्क्वायर। हाँ सर, x स्क्वायर कट जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई यहाँ पर 5a/6। कितना आया? 5/6 है। हाँ सर, 5/6 से मिल रहा है। तो 6ax is 9 minus 4 5a स्क्वायर, तो x मिल गया 5a/6। यही शायद प्रूफ भी करना था क्या? हाँ सर। यस सर। और थीटा भी मिल गया फिर, तो x का वैल्यू पुट कर दो। तो क्या क्या निकालना है? t निकालना है शायद, नहीं v निकालना है, जो भी निकालना है मिल जाएगा अब। यस सर। तो जल्दी से फटाक से x का वैल्यू पुट करके, पहले इक्वेशन 1 से तो t मिल गया, इक्वेशन 2 में t और थीटा और x पुट कर दिए तो v मिल गया। समझ आया? हाँ सर। चलो ये एक ठीक क्वेश्चन पूछा था। ये कौन सा नंबर था? 9th। 9th। अब बचा 6 11 6 13। ओ भाई साहब, सर अटेम्प्ट कर लेंगे सर बाकी सारे। 6 देखने दो। एक बार 11th देखो तो तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो तो। सर 11 तो हो गया सर। क्वेश्चन नंबर 11th एक बार पढ़ो। ये सेम क्वेश्चन है, जैसा सिमिलर है जैसा अभी किया था। हाँ सर। जस्ट अभी अभी जो यहाँ पर किया है वही सिमिलर है 11th। यस सर, ट्राई करेंगे वो। हाँ सर। नहीं ठीक है, 6 हाँ, सर। देखो अब। हाँ सर, इसमें सिर्फ रिएक्शन बिटवीन पार्टिकल एंड प्लेन वो नहीं आया। A particle of mass m attached to end A of a light inextensible string describe a horizontal circle on a smooth horizontal surface. The string has length 2L. ठीक है, and the other end B is fixed to a point on a plane. To a point. अरे बट इसमें टेंशन आ गया। अरे सुनो, एकदम सिंपल है। पहले वाले क्वेश्चन में ये 12 लेंथ के सर्कल में घूम रहा है। हाँ सर। ये हो गया पहला वाला क्वेश्चन। और दूसरे वाले क्वेश्चन में ये कोनिकल पेंडुलम है। हाँ सर। हाँ अच्छा, तो उसमें टेंशन। यहाँ से एल हाइट ऊपर, तो यहाँ से एल हाइट ऊपर है और 12 लेंथ का मेरा स्ट्रिंग है, तो ये इस सर्कल में घूमेगा। हाँ सर। आया? विजुलाइज हुआ क्या क्वेश्चन में डिफरेंस है ए और बी में? हाँ सर। हो जाएगा।
सर वो हो गया रिएक्शन बिटवीन प्लेन, वो नहीं हुआ। क्या 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 पूछा समझ में आ गया। देखिए दिया है रिएक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड प्लेन, वो नहीं हुआ। कहाँ लिखा है, क्या चाह रहा है? लास्ट सेकंड लास्ट लास्ट लाइन पूछ रहा है सर वो। If the angular velocity omega, find in each case the tension of the string and the reaction between particles. Reaction का मतलब हुआ कि इसमें तो हॉरिजॉन्टल सर्कल है, टेबल पर है। हाँ तो इसमें तो n और mg इक्वल होगा। यस सर। दूसरे केस में mg इधर, टी cos थीटा ऊपर, t cos थीटा ऊपर और n ऊपर। सर तो पहले वाले में तो mg होगा, दूसरे में n निकालना होगा। ठीक है सर कर लूंगा। पक्का? हाँ कहाँ गया भाई साहब? हाँ 13, 14, 15। 13 कहाँ? A 20 kg block attached to a spring constant 5 Newton per meter, ऐसा कुछ elongation 1 meter. The block is allowed to move in a smooth horizontal slot with the help of constant for 500 Newton in the rope as shown. The velocity of block as it reaches to B. ये बेटा सर्कुलर मोशन नहीं है, ये वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन है। ये वर्क पर एनर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये वर्क पर एनर्जी चैप्टर का क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन से कोई लेना देना नहीं है। 13 था ना नंबर इसका? हाँ सर वही समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें मोशन हो क्या रहा है सर। ये वर्क पर एनर्जी का क्वेश्चन है। 14th A collar B of mass 2 kg constant to move along horizontal circle 5 meter, ठीक है। The spring is lying in the plane circular track having a spring constant 200 Newton per meter is undeformed when collar is at A. तो देखो कॉलर जब A पर रहता है तब तो नेचुरल लेंथ है, तो जब B पर है तो कितना एक्सटेंशन इसमें होगा देखो। तो इसका मतलब है इसका नेचुरल लेंथ है 7 मीटर। यस सर। और अब हो गया 7 + 5 12 और 5 तो 13 हो गया। ये 12 ये 5 तो ये 13। हाँ सर 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। हाँ सर। तो ये 13 हो गया और नेचुरल 7 है, मतलब 6। हाँ सर 6 मीटर का इलोंगेशन है। हाँ सर। यस सर के तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस पर अलोंग इधर की ओर एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना kx का। हाँ सर। हाँ सर उसमें से k है कितना 200 और x हो गया 13 - 7 6। तो 200 × 6 1200 न्यूटन का फोर्स लग गया। ये समझे? यस सर। समझा। अच्छा, if collar starts from rest at B, the normal reaction force exerted by the track on the collar when it passes through A. तो यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग खींचेगा, तो यहाँ से होता हुआ जाएगा ऐसा। क्या
तो सर्कल पे घूमेगा वैसा ना? यहाँ से रिलीज करेंगे तो ये इस सर्कल पर घूमेगा ना? हाँ सर। तो ये इस सर्कल पर घूमेगा, तो पूछा है जब पॉइंट ए पर आएगा उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी, यही पूछा है। हाँ सर। इसमें भी ऐसे वर्क पावर एनर्जी है, बट लिख देता हूँ। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगा, बचेगा इसके पास हाफ एम वी स्क्वायर। समझ रहा है कुछ? थोड़ा सा नहीं। आपने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कंपेयर की। वर्क पावर एनर्जी शुरू कर दिया है सर ने? हाँ सर, हाँ सर, आज कुछ पढ़ रहे सुबह ही थे। पढ़ाया था ये रिलेशन। आज सुबह पढ़ा। काइनेटिक एनर्जी डेल्टा हाँ हाँ, तो स्प्रिंग अगर एक्स इलोंगेटेड है तो स्प्रिंग में एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, मालूम है? हाँ हाँ सर। सर। पक्का? हाँ सर पक्का। तो यहाँ से लो कर देता हूँ, हाफ के की जगह हो गया 200 शायद, और x की जगह हो गया 6 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ मास की जगह 2 इंटू वी स्क्वायर। ऐसा हो गया? यस सर। तो यहाँ से v 60 की आ गया। वैल्यू मिल गई 60 मीटर पर सेकेंड। हाँ सर। तो जब ये यहाँ से गुजर रहा होगा उस समय इसके पास स्पीड 60 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब इस समय सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तो कोई सेंट्रीपिटल फोर्स तो देगा नहीं क्योंकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कितना चाहिए, एम वी स्क्वायर बाई आर, मास 2 kg, वी स्क्वायर 60 का स्क्वायर 3600, और रेडियस आर कितना है? 5 7 5। तो ये यहाँ पर ट्रैक इसको नॉर्मल रिएक्शन यही देगा, तो ये जो भी होगा हमारा आंसर होगा। समझे? ठीक है सर। ओके सर। तो 2 इंटू 36 इंटू 20, सो 40 इंटू 36 कितना होगा देखो? 1440 ऑप्शन सी 1440। ऐसा कुछ है आंसर? यस सर। आया समझ में? हाँ सर। हाँ सर। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अभी 6:15 में मेरी दूसरी क्लास है। हाँ ओके सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। Thank you, sir. Will come out to be minus half in joules. So work done by the spring expectedly, okay, because they are always opposing each other, no? The external force and the spring force. The external force is always negative of the spring force at every point. Okay, so that is why it is obvious that work done by the external force is exactly negative of work done by the spring. So in order to pull the block against the spring force, we have to do this much work. If we are pulling it very gradually, and the spring will end up doing the negative work of minus 0.5 joules. Okay, so hope this example makes this clear for all of you. Okay, now the second part of the question is, now after reaching, oh, let's write it here. Okay. After reaching an extension of x equal to 2 centimeters, okay, if the external force is suddenly withdrawn, okay, then find the work done by the spring from x equal to plus 2 centimeters back to
natural length state. So what will happen is immediately the block will accelerate back because we've released it and the spring is pulling it back. So by the time it reaches back to natural length state, x equal to 0, what will be the work done by the spring? That's the second part of the question. So if you haven't done the first part, then take it down, and if you have, then calculate the second part. So if you withdraw this force when you reach this 2 centimeter mark, if you suddenly remove this external force, then the block will tend to pull back. It will tend to get pulled back by the spring force. Remember, at this point of time, its acceleration is 0. But the moment you remove this force, it gets pulled back. So by the time it reaches back to x equal to 0, what is the work done by the spring? So it's, yes, obviously it is 0.5 joules plus of 0.5 joules. For that, you can directly use the formula. Okay. So the second part, from the initial position of plus 2 centimeters to the natural length, the work done by the spring will just become minus half k. Yes. So it becomes plus half k into 2 centimeters square. So when you do the calculation, so whatever negative work it had done, now it is done equal and opposite positive. Okay. So just make a note of this, people. So in the second case, when we are coming back from the extension of 2 centimeters to natural length, that time there's no external agent. We will withdrawn that force. Okay. And of course, weight and normal reaction are always balancing each other. So the spring ends up doing this much work. So later when we see work energy theorem, we'll see that this work done by the spring is converted into kinetic energy. So when you release the block from that extended state, it gains kinetic energy as the spring relaxes. And by the time the spring is back to natural length state, it would have gained this much kinetic energy. The kinetic energy of the block would have become 0.5 joules. Okay, people, so this is where we will conclude today's session. Now, very important for you is I will send you a list of questions to do from HCV also, but also do a bit of reading work. Okay. In this chapter in work by energy. So read about all the things that we've discussed. The general definition of work done, okay, the concept of path integration or calculation of work done, okay, work done by spring force, okay, and then in context of what we are going to discuss in the next lecture, read ahead about something called conservative and non-conservative forces, conservative versus non-conservative forces. So this is going to be important in the next couple of lectures when we discuss, and the concept related to that of potential energy.
So I'd like you to do some early reading about this, plus HCV questions, which I'll send you a list of. You can start doing. Also solved examples from HCV. Okay, and next time when we discuss some HCV questions, we'll also pick up some of the doubts in friction. Okay, so keep your doubts, particularly from the module for friction, ready. Okay, I think HCV, all of you finished by now. And in the next lecture, while we are doing questions from HCV for work by energy, we'll also pick up some of the questions from friction, if anything is pending. Okay, so that's it for today's session, people. All the best.